that deals with joint stock company, under which we are covering two very important documents which are known as Article of Association and Memorandum of Association. In this lecture, I'll ponder upon Article of Association. I will be basically concentrating on different aspects that are related to article and why they are important for a joint stock company form of business. Now, the first thing is to understand what is Article of Association. मतलब Article of Association होता क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, बट उसका रेलेवेंस, उसका इंपॉर्टेंस और उसका मतलब क्या है, दैट इज द मेन थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड बेसिकली ponder upon right now. Now, Article of Association refers to a document that contain all pieces of information relating to the company's information for the type, nature, and purpose of business, to its appointment process and financial reporting procedures. The Article of Association covers everything. In short, this set of credentials act as a guide and ready reference for all external and internal stakeholders. तो इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन डिफाइन या मैं बता सकती हूँ कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डील करता है. ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स यानी कि जो लोग इंटरनली अफेक्ट करते हैं, अंदरूनी पार्ट कंपनी का अफेक्ट करते हैं, या फिर एक्सटर्नल, दैट मीन्स आउटर पार्ट ऑफ द कंपनी, all these are basically going to be covered under the article of association. Article of Association simply is an association form, a document that specifies the regulations of a company's operation and defines the company's purpose. The document lays out how tasks are to be accomplished within the organization, including the process for appointing directors and handling financial records. The Article of Association constitutes a set of guidelines every company needs to follow, and these guidelines are to be followed pan the company. It is not only that the people who are at the bottom who are going to follow the article of association or the things which are mentioned in the article of association, but everyone who is belonging to or basically part of the company has to adhere that. तो सिंपली ये समझें कि आर्टिकल वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या चीजें जरूरी हैं जिससे कंपनी के फाइनेंशियल्स हो या फिर कंपनी का अपॉइंटमेंट हो डायरेक्टर्स का, वो सब कुछ मेंशन होता है आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. तो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द परस्पेक्टिव, बिकॉज आप दोनों तरह से डील कर रहे हो, अपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स को और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए. तो क्या ऑल्टरेशन यानी कि क्या आप बदलाव कर सकते हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में? जी, आप बदलाव कर सकते हो. यू कैन डू चेंजेस और यू कैन अमेंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विद द फॉलोइंग थिंग्स, लाइक अ कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन alter or add to its article, and this has to be done and it has to be informed to the people who are more to the registrar of the company, और ये 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए. यानी कि आप ऑल्टरेशन या एडिशन कर सकते हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, बट आपको ये जो भी चेंजेस करोगे विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंफॉर्मेशन एक रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू पहुंचा देनी चाहिए. Article of associations are like partnership deed in a partnership. They particularly provide the matters such as making of calls, forfeiture of shares, directors' qualification, the procedure for transfer and transmission of shares and debentures, power, duties, and appointment of ऑडिटर्स. मतलब हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप देखोगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कवर कर रहा है. जिस तरह से पार्टनरशिप डीड का रोल है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में, सिमिलरली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी रोल होता है आपका कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. तो जो मेजर फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं? Structure of the organization along with the control mechanism, voting pattern of the and the rights of employees, mode of conduct, rights of basically or the directors meeting, code of conduct for the annual general meeting of the shareholders, the difference in rights of different kinds of shares, difference that you will find in both the documents, that is article and memorandum, are here discussed in the following slide. Now, memorandum of association is a charter of the company and defines the scope of its activity, whereas article of association
of the company are document which regulates the internal management of the company. यानी ये सिंपल समझा रहा है कि मेमोरेंडम जो है वो किसी भी देश के कानून की तरह है, जो जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए, जो आपके बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल मैनेजमेंट को डील करेगा. Whereas आर्टिकल वो डॉक्यूमेंट है दैट इज ओनली डीलिंग विद द इंटरनल मैनेजमेंट, मीन्स डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हेल्ड किए जाएंगे, एनुअल जनरल मीटिंग्स कब होंगी, मोड ऑफ ऑपरेशंस क्या होगा उनका, डायरेक्टर्स की मीटिंग कितनी बार होनी जरूरी. तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मेंशन की जाएंगी, ये सारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाती हैं. दूसरा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड एक्सेप्ट इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड बाय द एक्ट. We all know that this particular form of business is being dealt by Companies Act of 2013. So जो भी Companies Act में mention होगा accordingly ही आपका मेमोरेंडम एक्ट करेगा, उसके अगेंस्ट वो कुछ नहीं कर सकता या उससे ज्यादा वो कुछ नहीं आपको दे सकता है. लेकिन आर्टिकल जैसे कि मैं बात कर रही हूँ बायलॉज कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को डील कर रहा है, तो यहाँ हम चेंजेस कर सकते हैं बट एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू दैट हैज टू बी डन and it has to be sent in hard copy to the registrar of the company. Memorandum is supreme document because हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा. While article is subordinate to memorandum because article falls under memorandum of association. Every company must have its own memorandum. हर कंपनी को अपना मेमोरेंडम मेंटेन करना जरूरी है. लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, वो उनके लिए आर्टिकल जरूरी नहीं है उसको मेंशन करना. हर कंपनी में अलग अलग टाइप्स के शेयर्स होंगे, अलग अलग टाइप्स की सिक्योरिटीज होंगे, एंड अकॉर्डिंगली दे हैव डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मेंटेन दैट. सो दैट इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू डिफाइन द article of association. A company cannot depart from the provision contained in the memorandum, and if it does, it would be ultra virus of the company. That means something which is done against the legal power or authority of the company. So when it comes to define basically giving impetus to a document that is known as memorandum, आप कोई भी चीज उसके अगेंस्ट या उससे ऊपर नहीं कर सकते because it is again dealt by the Companies Act of 2013. Whereas when you talk about article of association, आप मेमोरेंडम के चीजें चेंजेस कर सकते हो बिकॉज आप इंटरनल मैनेजमेंट को मेमोरेंडम कर रहे हो, आर्टिकल में कर सकते हो क्योंकि वो इंटरनल मैनेजमेंट को डील कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई यू कैन जस्टिफाई योर स्टेटमेंट और जस्टिफाई दैट व्हाई यू आर डूइंग certain things which is as important. Now these are some of the contents or which you will find in a article of association that defines the business, the amount of capital invested, the rights of each class of shareholders, and the procedures of variations, execution or adoption of preliminary agreement, if any, how allotments of share can be done, how forfeiture of shares can be done, the allotment of shares, transfer कैसे होगा, कंपनी का line on shares क्या है, जनरल मीटिंग्स कब होंगी, उनकी नोटिस किस फॉर्म, क्या कोरम होगा, कैसे वोटिंग्स होंगी, डिविडेंड्स क्या होंगे, अकाउंट्स और इंटरनल ऑडिट की बात की जाए, स्टैट्यूटरी बुक्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा. So in all, this article of association is a document that is basically maintained for the internal aspect of the joint stock company, and that plays an important role when it comes to the formation and basically the company form of organization. Till we meet in the next class, keep learning and do subscribe if you have not subscribed to the channel. Thank you.